हेलो एवरीवन। नाउ एप्लीकेशन ऑफ फोरियर सीरीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला था कि इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इट इज़ क्वाइट यूज़फुल वाइल ट्रांसमिटिंग द सिग्नल्स, क्योंकि ये टू प्रेजेंट और टू एक्सप्रेस द वेव इन साइन एंड कोसाइन फॉर्म इट इज़ क्वाइट यूज़फुल। सो वहाँ पे उसका एप्लीकेशन वाइडली होता है। देन अगर कोई भी ऑर्थोगोनल सिस्टम मीन्स द sin x con x cos x cosine x over the period, this is the interval which is given minus pi to plus pi. So the function which is given like in that interval, then that is the special type of system and that's called orthogonal system. Then one important point is here, Dirichlet's boundary conditions. So whenever any series मतलब means कोई question दिया जाता है and it's been asked us to expand, मतलब उसको series form में, Fourier series के form में अगर उसे लिखना है, then that function, given function should satisfy certain conditions. So those conditions are nothing but Dirichlet's conditions. What are those conditions? We will be looking here in detail. So that given function should satisfy this condition in order to apply or in order to write them in the form of Fourier series. तो यहाँ पे जो condition लिखती है, first condition is it must be periodic, finite and single valued. Periodic का मतलब I think as I said before, periodic मतलब after certain time duration that signal is repeating its a value. So that's the reason after period it's repeating, that's why it's a periodic. Then it should be finite, it shouldn't be like it's keep going till infinity, it should have some finite, it should be finite. Then it should be single valued, it shouldn't have multiple values like plus and minus and plus 2 minus 2 plus 3 minus 3 something like that. So it should be single valued. Then this is the first condition. Then second condition is यहाँ पे second condition जो लिखी है, f of x has discontinuities at finite number of points. So discontinuities का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जैसे कि किसी फंक्शन दिया हुआ है, let's say f of x की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ 2, तो उसकी वैल्यू जो निकल, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल, दिस f of x की वैल्यू एट पॉइंट x इज इक्वल टू 2 अलग है, मतलब लेट्स से इट इज़ कमिंग लाइक 8 एंड इफ f of x की वैल्यू अगर x से कम 2 से कम है, व्हाट आई कैन से दैट f of x व्हेन x इज़ लेस दैन 2, x इज़ लेस दैन 2 कैसे लिखते हैं हम, 2 माइनस 2 के ऊपर हम माइनस लिखेंगे, तो इसकी व्हेन द x वैल्यू इज़ लेस दैन 2 इट हैज़ सम डिफरेंट वैल्यू. Let's say it has some value like a 6, I am taking example, then f of x has some different value when x value is 2 से थोड़ा ज़्यादा है. So I have written here x is equal to 2 plus, मतलब 2 से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू हो सकती है, कितनी भी हो सकती है लेकिन 2 से ज़्यादा होनी चाहिए. तो and that point it has some other value, let's say 10 is there. So if you see this at point x, at point 2 the value of f of x is 8, at point less than 2 the f of x value is different, at point x is equal to 2 plus, मतलब 2 से जब भी ज़्यादा हो जाती है तो वैल्यू f of x की अलग हो जाती है. मतलब ये 2 एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा है, मतलब उसकी वैल्यू चेंज हो रही है. So this is what its meaning of a discontinuous. I just gave a very simple example. So what it says, the second condition, what second condition says, f of x has discontinuous at finite number of times. मतलब कुछ थोड़े पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जहाँ पे फंक्शन डिसकंटिन्यू होता है. Now third condition is f of x has only one maxima and a minima in any period. मतलब जो मैक्सिमा पॉइंट होते हैं, मिनिमा पॉइंट होते हैं, जो वहाँ पे only one should be there, not more than one. Point of maxima and minima that we have learned, like
Now next is so these are nothing but boundary conditions or Dirichlet's boundary conditions. Sometimes it gets asked in the exam also. So in order to apply given function, or in order to write the given function in the Fourier series format, this condition should be satisfied. Now next thing is interval, Fourier series interval. This is also very important thing. You have to understand कि इंटरवल क्या है, मतलब सीरीज़ अगर लिखनी है तो कौन से इंटरवल में लिखनी है. इंटरवल इज़ इन द सेंस, इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट इट्स अ रेंज. लाइक उसमें भी रेंज मतलब लाइक फ्रॉम 2 to 4. दिस इज़ नथिंग बट अ रेंज. Same way to find the series also, that range has been given. Sometimes it's given in the radians format, or sometimes it's given in the constant format. Either way there should be given. This interval also gets classified into two ways, like a full range and half range. Full range में मतलब क्या होता है, यहाँ पे simple I will draw the diagram. Full range मतलब यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे π/2 होती है, यहाँ पे पाई वैल्यू होगी, यहाँ पे 3π/2. दिस इज़ 3π/2 एंड अगेन इट विल बी 2π. मतलब अगर हम यहाँ पे पूरा सर्कल अगर कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे ये होगी फ्रॉम 0 द वैल्यू स्टार्टिंग, बेसिकली इट्स गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. यहाँ से 0 से मैंने स्टार्ट किया और डायरेक्ट आई कंप्लीटेड द होल सर्कल एंड केम बैक टू द पॉइंट वेयर इट इज़ 2π अगेन. So that full range or the full circle, that became a full range. So sometimes this is given in terms of radians, like a pi के term में दिया जाएगा. Sometimes it's given in the form of some constant values, like 0 to, like for example +2 to -2, something like that. So it's in terms of constant also it can be given, but basically this is a full range. यहाँ पे भी 0 to 2π, जैसे कि मैंने यहाँ एग्जांपल दिखाया है 0 to 2π, तो वो फुल रेंज बन जाती है. और -π to π, that is also full range. So it's very important for you to understand whether the given limit full range है या half range है, क्योंकि depending on that the solution will get changed. तो आइडेंटिफाई करना important है इंटरवल कौन सा दिया हुआ है. हाफ रेंज का भी दैट इज़ द वन कंसेप्ट. यहाँ पे भी दो टाइप हो गई, ईदर दैट लिमिट गिवन विल बी इन द रेडियंस फॉर्मेट, इन द पाई फॉर्मेट, इन द और इट कैन बी गिवन इन द कांस्टेंट ऑल्सो. सेम डायग्राम आई विल बी ड्राइंग हियर अगेन. यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई 3π/2 एंड यहाँ पे जो होगा वो 2π होगा. अगर यहाँ से आप स्टार्ट करते हैं लिमिट की रेंज अगर 0 से पाई दी हुई है, सो वी हैव जस्ट कंप्लीटेड हाफ सर्कल. तो हाफ सर्कल है तो वो हाफ रेंज है, सिंपल टू अंडरस्टैंड. सो एंड दिस कैन बी गिवन इन द पाई फॉर्मेट. सो अगर पाई फॉर्मेट पे दिया है तो वो 0 to पाई उसको बोलेंगे. अगर इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट लिखा हुआ है, लाइक फ्रॉम 0 to 2 और 0 to 4, समथिंग लाइक दैट, numbers are getting used, then it's a constant limit. So this is the two types or two categories of intervals. और ये बहुत ही important है समझना कि जो दिया हुआ है फंक्शन उसका लिमिट क्या है, because formula will be different. Let's take a small break over here. Meantime, you can revise the concept. In the next video, we will be discussing this more in details.